एक बहुत कामयाब सनअतकार ने एक बहुत ही अहम समाजी मुद्दे को उठाने के लिए अपने पेशे को ही छोड़ दिया। साल था 1997 और वो आदमी अब मशहूर जैक्सिम। उन्होंने दुनिया के एक तिहाई लोगों के लिए साफ सफाई के इख्तियारात के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोग महफूज तरीके से साफ सफाई के मुनासिब इंतजामात किए बगैर रहते हैं। इनमें से कई अफराद खुले में बैतुल खला की कोशिश करते हैं। इससे सेहत, माहौलियात और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को बड़ा खतरा है। जैक्सिम की कोशिशों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और उनके अरकान ममालिक ने पानी और सफाई के लिए एक आलमी सतह पर तरक्की का निशाना मुकर्रर किया है। आज यौम बैतुल खला पर आइए जैक्सिम को सुनते हैं। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve. In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases.